Okay. Though I'm keeping my camera off today, I have got throat eye sub infection. Okay, so with this, I am live on the channel also. Actually, on our Ask NEET channel now, we are putting some sessions live. So I'm supposed to take photosynthesis also, but I'll take your doubts first, and then I'll continue if it's needed. It's fine. Okay. So, anyways, dears, team told that you have doubt and everything, and you were keeping separate session. I told like, okay, मतलब session में पहले ही attendance is dropping and everything. So let's start with the session and tell me your doubts. So, hi guys, since I'm live now, for them, student, if you're listening, I'm taking doubts, and then we will continue if time left. Chalo. So let me take your doubts now. So can I ask chapters? I mean, what chapter you have doubts from? Actually, I have doubt in 2-3 concepts. Like, I just read the neural control and coordination chapter from 11th, and the description of gear and all the mechanism, how it works, it was not very clear to me. It was not detailedly given in the textbook. Okay. Acha, do you want notes also, or I can refer to 11th note? It will save a lot of time. Yes, ma'am, that's fine. अच्छा, दूसरा ये है कि you only want to know nerve conduction वाला part, right? No, ma'am, the structure and how it works, the mechanism also of the ear part. Acha, human ear. Okay. Ear. I thought like you are talking about this impulse, generation of impulse and all. Okay, so now, dear, I will be teaching you about ear, though I have put some videos also. I'll talk about it later. So let me take on that. Acha, first of all, I want to know, I have already uploaded lots of pictures, so it'll be very much time saving. First of all, I wanted to know, you remember basic parts of human ear? Yes, ma'am. Outer ear, middle ear, inner ear. And what are the subparts in all of them? Outer ear has the pinna and the auditory canal. The middle ear has got the eardrum, and all the 3 bones, ear ossicles, malleus and pons and very stapes. Nice. That is connected to the cochlea, which is the inner ear. There's a eustachian tube that is there, and nice. And other than this, what do we call cochlea? Na? There is vestibular apparatus also. Okay, so and one more thing, you remember diagrams of all that you can visualize if I teach you, or I mean, I'm just thinking in my head when to show you the video, initially or baad mein? Later on. You can visualize all the diagrams, right? Yes. Okay, that is what I wanted to know. Chalo bhai, let's start talking about. I'll start it from very starting and I'll keep it very crisp since you know a lot of things. I got to know from the way you have explained everything. So now, dear, our ear parts and everything, it is a statoacoustic organ, and no explanation on inner ear, middle ear and everything because you know all the parts, then this one. So if you see this diagram is actually explaining, I uploaded this diagram because I wanted to talk about oval window and round window. Okay, so other than external ear is there, middle ear and internal ear. Between external ear and middle ear, tympanic membrane is present, right? And other than that, between middle ear and internal ear, there are 2 windows present. This oval window and middle window, it is present in between internal ear and middle ear. I mean, it's a kind of 2 membrane. It's kind of, jaise tympanic membrane is very thin, na? It is similar type of. Got my point? And round and oval is its shape. Okay, so oval window is present here and round window is present here. So if you see round window somewhere is present nearby eustachian canal, while oval window is somewhere nearby the क्या बोलते हैं उसको स्टेप शेप है ना ये, तो इसके आसपास it is present. Got it? Yes, ma'am. So this is another diagram. I don't know whether in this diagram you can understand oval window or round window or not, but clearly this is visible here. This is round window. And this one is oval window at this location. Okay, it's okay if you cannot understand it. I mean the diagram because it'll be needed later when you will be learning probably the surgery part. So now, dear, just understand oval window. This is also known as fenestra ovalis.
And round window, this is also known as fenestra rotundus. Okay. Now talking about the external ear. We know that this is our ear pinna, and our ear pinna, this is also known as auricula, and it is present in mammals. ठीक है, ये जो कान का ये वाला पार्ट होता है ना, the one that internally, you know, a little depression, that is known as concha, and then this leads to the auditory meters. Your what do we call, ये जो auditory meters है, this is nearby 2.5 centimeter long. Okay, so you should remember this value also, that external auditory meters, it is also little curved also. It extends from concha to the tympanic membrane. Auditory meters, it is present from concha to tympanic membrane. और हमें पता है कि हमारे ear में ear wax होता है. So now into this auditory meters, there are ceruminous gland present which release cerumen that we call it as ear wax, and it is rich in wax and lipids. It is very much protective in nature because it protects against bacterial infection or fungal infection. ठीक है? Minimizing my screen light. इसके बाद let's talk about middle ear, and please ignore the background sound. And next is this middle ear. We know that middle ear में two opening oval window and round window, so not going to discuss that. And next is tympanic membrane. Our tympanic membrane, this is formed from pharyngeal extension. Okay, so basically, just give me 2 minutes, okay? I'll be back. Okay, sorry, dear. You connected? Yes, ma'am. Okay, so now I was telling कि this tympanic membrane, this is formed from pharyngeal. Pharyngeal means pharynx. We know that our nose and mouth, they are meeting up at a common point, which is pharynx. उसी की extension होता है tympanic membrane, and it is endodermal in origin. Got it? Did you get it? Yes, ma'am. ओके इसके बाद ओवल विंडो हो गया, राउंड विंडो हो गया, एंड ये भी हो गया, ठीक है. अच्छा, यूस्टेशियन कैनाल इज आल्सो पार्ट ऑफ मिडल ईयर. तो टिम्पेनिक कैविटी के ही नीचे ऑडिटरी ट्यूब होती है. यूस्टेशियन कैनाल that is present here, as you see, I already have highlighted. This is a auditory tube and it open into the pharynx. That's why you know that when we take ear drop or eye drop, those things are connected, especially ear drop, we taste it because it's connected. Okay. Ma'am, I just have a doubt. Is the auditory tube connected to the eustachian tube, or is it one and the same thing? It's the same thing. Auditory tube है ना, ये hearing में help करता है. Okay. जैसे when देखो हमारा mouth जब भी open होता है ना, when we are eating, talking, तब ये eustachian tube ना open होता है. हमें पता है कि जो ईयर है दैट इज मेंटेनिंग आवर इंटरनल बैलेंस, और वो एयर का प्रेशर, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके इधर और इधर प्रेशर दोनों साइड पे सेम होना चाहिए. तो बाहर की साइड से तो एयर है, बट अंदर की साइड से आवर माउथ से दैट कनेक्शन इज देयर. गॉट माय पॉइंट? तो इट समहाउ प्रिवेंट रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन. जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ना, ये यूस्टेशियन कैनाल उसको रप्चर करने में, क्योंकि यहाँ से एयर पास ऑन होता है वहां पे. गॉट माय पॉइंट? So it is open during chewing. I have written it on the screen. Open during chewing, swallowing, and yawning, and it prevents rupturing of tympanic membrane whenever there is a loud sound. So because it maintain equal pressure, as simple as that. Got it? Ma'am, I have a doubt. Like, in most of the time we keep our mouth closed only, right? So how does it balance the My pressure? mouth में air, it's a cavity, na? Okay. Yeah, it's a cavity. It's not like it's airtight closed, so it's fine.
अच्छा, एनीवेज इसके बाद बात करते हैं, तो वी आर डन विद दिस। अब मैं बात करूंगी ये स्टेप्स इंकस के बारे में, मिडिल ईयर के जो बोन्स है, बट उससे पहले जस्ट अंडरस्टैंड जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है दैट इज ओपनिंग इनटू द ओवल विंडो, क्योंकि ये इंटरनल ईयर की तरफ मूव कर रहा है। एंड जब इंटरनल विंडो की तरफ ओपन करता है तो इसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन तीनों बोन का काम क्या होता है, दे एम्पलीफाई द साउंड। ठीक है, बर्तन है ना, इट्स काइंड ऑफ एक चीज दूसरे पे बज रही है, दूसरा तीसरे पे बज रहा है, सो दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। तो अल्टीमेटली यहाँ से एयर गया, वो इस बोन्स को वो करेगा, और फिर ये बोन्स हमारा जो कोक्लिया है उसके अंदर जो फ्लूइड है उस पे वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। गॉट माय पॉइंट? यूर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक कि सबसे पहले एयर गई, एयर ने टिम्पेनिक प्रेशर पे प्रेशर डाला, फिर उस प्रेशर की वजह से ये तीनों बोन्स ऐसे ऐसे डांस करने लगते हैं, एक दूसरे पे बजने लगती हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ साउंड में भी। अब ये वाले साउंड का इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड पे जो इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड जो होता है ना, जिस तरीके से प्रेजेंट होता है उसमें ना सेंसरी हेयर्स होते हैं, सेंसरी हेयर, हेयर्स में हेयर, तो उसमें फ्लूइड में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और ये वाले हेयर उस वाइब्रेशन को रीड करते हैं और फिर उसको ब्रेन तरफ सिग्नल पास आउट करते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। तो अब बात करते हैं इनकी ऑडिटरी ऑसिकल्स की। 3 ऑसिकल्स हैं, स्टेप, सिंकस एंड मेलियस। डायग्राम में आपको दिख रहा है पहले ही। तो ये डायग्राम जो है वो उल्टा है, उल्टा है मतलब राइट, ये दूसरे वाला ईयर है हमारा, लेफ्ट वाला ईयर। तो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम से जैसे ही साउंड आया तो मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। जो मेलियस है वो है हैमर शेप्ड, और जो इनकस है वो है एनविल शेप्ड। एनविल समझते हो क्या होता है? नो मैम। तुमने कभी मोची से जूता ठीक कराया? डू यू नो व्हाट इज अ मोची? आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश। नो। Literally in India, if you come on the roadside, there are people who will literally, for the footwear and everything, they are polishing. And if there is some issue with the footwear, they will, they will seal it off, or whatever be the issue with the footwear. So those people. Got my point? Have you seen? Yes मैम। So they have an instrument to keep the footwear. So whenever they take the footwear ना, उनके पास something like, I don't know how do I say, वो एक ना वो होता है, उसको एनविल बुलाते हैं एक्चुअली, ऐसे टाइप का होता है जिसके ऊपर they put the जूता, they put the footwear and then ठक 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 kind of. So that is like the anvil. So that is anvil shaped. Got my point? यस मैम। उसके बाद third is stapes. Stape is stirrup shape. You know what is a stirrup? यस मैम। Stirrup is something which is for during horse riding, तो होता है ना, for the feet, like the rider will put their feet in. So, and one more thing, this stapes, this is the smallest bone of our body, just remember. Got my point? Yes मैम। So ear ossicles, they not only conduct sound vibration, but also they amplify them. And the smallest bone, stapes, it fits into the oval window. This stapes, where do I write? It fits into oval window. The place where they are present now, that is present, this is known as oval window. Okay, exactly this place. Exactly this place is oval window. Got it? Yes So ma'am। now there on the right side, you see another diagram. Incus, Ma'am, the stapes completely cover the oval window. sorry. हाँ Does हाँ हाँ stapes हाँ हाँ completely? completely नहीं, मतलब the way it is present थोड़ा सा तो रहता ही है. You will be getting to know in the video also. मतलब फिट ही होता है, बट ये है कि ब्लॉक नहीं होता है वो. The way it is present, not completely blocked. So this is tape. I'm so sorry. This is tape. This is base of the tape. Then this is connected to incus, and then this is malleus. मतलब this is incus. अरे यार, sorry. This is incus. Rest you know. And this is another picture. Stirrup. Chalo. So now, dear, let's talk about internal ear. Up to here, everything is clear. Yes Easy. ma'am। Okay. Internal ear. This is where the sound vibration finally will go. And oval window, because the oval window is very small, so the sound pressure is amplified.
ठीक है, it is amplified by 20 times. So open via oval window, and because this oval window is very small, I have already written it. It is amplified by 20x times sound. So our internal ear, let's take a look at this. It consists of vestibular apparatus and cochlea. So you know that cochlea, it has all this nail-shaped structure, and rest all of it is vestibular canal. And as you see into the vestibular apparatus, there are semicircular canal present, anterior, lateral, and posterior. Okay. Now, dear, let's understand the fluid. Acha, one more thing before I talk about it. There are two parts present into what do we call? Wait a second. Semicircular canal. The sensory part of internal ear is membranous labyrinth. If you see this diagram, there are blue and pinkish color in this diagram. One is bony labyrinth. Wait a second. I think I should. Yeah. So one is bony labyrinth and one is membranous labyrinth. The word labyrinth means network. Fine. And bony labyrinth means it is in contact with the bony structure and somewhere hard, and membranous means it has more of the membranes present in it. Got my point? Got my point? Okay. Yes, so now what I want to say, the sensory part of internal ear is membranous labyrinth. This is sensory nature. There are two type of fluid present into our internal ear. One is perilymph and one is endolymph. Into the membranous labyrinth, endolymph is present. Okay? Into the membranous, endolymph is present. And now, dear, that doesn't mean that into the bony labyrinth, perilymph will be present. Nothing like that. First of all, just understand bony labyrinth covered by temporal bone. This is our temporal lobe, and above that temporal bone. So bony labyrinth is covered by temporal bone. Got it? Where is perilymph present? Perilymph is present in between bony lymph and membranous lymph. In दोनों के बीच में present होता है. If you see this diagram, this bluish color part, like suppose, how do I see? Achha, I'll tell you. I have a diagram for that. I'll tell you that later. Just just remember, remember, in between bony and membranous lymph, perilymph is present. Got it? So can we say that the membranous labyrinth is surrounded by the perilymph? You can say that. Okay. Achha, I have written it here also. In between bony and membranous labyrinth, perilymph is present. So now how, that I'll tell you in further diagram. Okay. So now, dear, the next thing that I want to tell, as I mentioned you that there are 3 semicircular canal present, out of which 2 canal are vertical and 1 canal is horizontal, that you already see on the screen, right? And they have perilymph in it. They are having perilymph in it. Okay. So only perilymph is there in the semicircular canals, right? The fluid is between bony and actually that is true. That's so. हाँ, यहाँ पे पेरिलिम्फ होता है. एक्चुअली में ना जो कोक्लिया होता है ना, उसमें दोनों होते हैं, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ. एक मिनट रुको. टू वर्ड, ठीक है. कवर्ड बाय बोनी के, नहीं 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 नहीं, वेट, नहीं, इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे एंडोलिम्फ होता है. आई टेल यू वेयर. ये जो यूट्रिकुलर वाले एरिया होते हैं ना, यहाँ पे सम लिटिल अमाउंट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो इसमें तो पेरिलिम्फ इज प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इनटू द सेमी सर्कुलर कैनाल पेरिलिम्फ इज प्रेजेंट व्हिच इज कवर्ड बाय बोनी कैनाल. अंडरस्टूड? यस. अब जो ये वाला एरिया है ना, ये जो स्वोलन एरिया मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने पहले से येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये होते हैं स्वोलन एरिया. इनके लिए हम एम्प्यूला वर्ड यूज करते हैं. एम्प्यूला, इनके अंदर होता है एंडोलिम्फ. ठीक है, got it? At the base of the semicircular ducts, just yes. That is the ampulla. Correct. ठीक है, मतलब हर कैनाल के एंड में देयर इज एन एम्प्यूला, और एम्प्यूला के अंदर होता है सेंसरी हेयर एंड एंडोलिम्फ. ये जितने भी एम्प्यूला ना, यूट्रिकुलर जो भी है, इनके अंदर क्या होता है? सेंसरी हेयर एंड एंडोलिम्फ. और तुम्हें पता है ये सेंसरी हेयर एक्चुअल में नर्व सेल की ही मतलब वो है, नर्व सप्लाई है, व्हिच यू नो सेंस द वाइब्रेशन.
ठीक है, अब जो utriculus है also has a group of hair present at it. Can I move forward? Yes, ma'am. Ma'am, I just wanted to clarify. So the Yeah. root hairs, are they like extensions of the nerve cells or something, or do they have a nervous supply? Root hair are extensions of the nerve cell. Okay. Yeah, there's a diagram for that. अच्छा, इसके बाद as you see this is utricule. ठीक है, तुम्हें पता है जो वन ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके बेस पे यूट्रिकल इज प्रेजेंट. ठीक है, तो यूट्रिकल में भी हेयर सेल होते हैं इसके फ्लोर पे एंड उसको बोलते हैं मैक्यूला यूट्रिकुलस. मैंने यहाँ पे, एक मिनट रुको, शायद मैंने यहाँ पे लिखा था वो, हाँ ये है ना यूट्रिकुलस. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वन ऑफ द सेंसरी कैनाल है जो ये दिख रहा है ना तुम्हें इस डायग्राम में, इसके बेस पे इधर होता है यूट्रिकुलस. यूट्रिकल मतलब एम्प्यूला ही है ना. यूट्रिकल के बेस पे सेंसरी हेयर आर प्रेजेंट एट द बेस एंड इसके चारों तरफ यू नो दैट एंडोलिम्फ इज प्रेजेंट. ठीक है, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैक्यूला यूट्रिकुलस. इस सारे स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज मैक्यूला यूट्रिकुलस. आई थॉट लाइक ऊपर मैंने लिखा है बट आई डोंट नो. मैक्यूला यूट्रिकुलस. गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. इसके बाद नीचे जो स्ट्रक्चर है अच्छा दूसरी चीज, जो ये मैक्यूला यूट्रिकुलस होता है ना, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तुम्हें इस डायग्राम में भी दिख रहा है. एक मिनट में ये डायग्राम हाईलाइट करती हूँ फिर से. ये मैक्यूला यूट्रिकुलस का ही एनलार्जमेंट है. ये डायग्राम दिख रहा है ना तुम्हें, ये Yes, इसी ma'am. चीज का यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है. कि सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो सपोर्टिंग सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन सब कुछ है, बट अभी यू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे है हेयर सेल्स. आपको टाइप 1 टाइप 2 करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे है ये हेयर सेल. और जो हेयर सेल है इसी को बुलाते हैं हम मैक्यूला यूट्रिकुलस ना, कि इसमें सेंसरी एंडोलिम्फ है और ये सब. ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है कि ये हेयर सेल है, इसके जस्ट ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन. क्या बुलाते हैं? ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन. गॉट इट? हेयर सेल्स आर सराउंडेड बाय दिस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट. क्रिस्टल्स होते हैं उसके. आई हैव रिटन इट हियर दैट देयर आर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट, और इन क्रिस्टल्स को हम ऑटोलिथ एंड ऑटोकोनिया बुलाते हैं. क्वेश्चन आई हैव सीन इन द सैंपल पेपर. गॉट इट? Yes, ma'am. समझ गए? अब बात करते हैं, यूट्रिकुलस हमारा हो गया. ऐसे ही सेक्यूलस जो होता है उसके अंदर भी हेयर सेल्स होते हैं और उसको हम उसमें भी एंडोलिम्फ होता है और उसको मैक्यूला सेक्यूलस बुलाते हैं. ये लेफ्ट साइड पे है ना एनलार्जमेंट ऑफ क्रिस, नहीं इसमें नहीं है डायग्राम में. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना ये सेक्यूला, सेक्यूल ये वाला, तो ये भी रेडियल कैनाल के एंड में प्रेजेंट है. ये डायग्राम थोड़ा सा सेक्यूल इन्होंने गलत तरीके से दिखाया है. नहीं नहीं ठीक दिखाया, ठीक दिखाया है. ये देख रहे हो इस वाले डायग्राम में ये वाला एरिया, ये वाला जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, यही वाला एरिया है ये सेक्यूल वाला. समझ गए? Ma'am, so saccule is also the base of one of the canals, right? यस. ये बेस Okay. नहीं है ना, अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीटली बेस नहीं है. जब सारे सेमी सर्कुलर कैनाल मिल गए तो वो सेक्यूल के थ्रू कोक्लिया में जा रहे हैं. गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये सेक्यूल ये वाला एरिया है. तो जो सेक्यूल है ना वहां पर भी सेंसरी हेयर आर प्रेजेंट. उसको बुलाते हैं हम यूट्रिक्यूल, यूट्रिक्यूलस, यूट्रिक्यूल सेक्यूलस, सॉरी. गॉट इट? वहां पे भी सेंसरी हेयर इज प्रेजेंट. आई एम सो सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैक्यूला लिखना था मुझे, मैक्यूला. मैक्यूला सेक्यूलस. ओके, क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये हो गया यूट्रिकुलस हो गया. हाँ, अब बात करते हैं. हाँ Ma'am, so when the vibrations come, so these root hairs also they get they brush over the membrane. इसी रूट हेयर से तो इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि रूट हेयर के नीचे नर्व सप्लाई है. ये नर्व फाइबर फर्दर सप्लाई करते हैं. ये रूट Okay. हेयर ही इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर में. गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो इसके बाद जो कोक्लिया है ये सेंसरी नेचर का होता है. एंड इफ यू सी द डायग्राम, इसके अंदर टोटल 2:3/4 कॉइल्स होते हैं. इट्स लाइक अ स्नेल. ठीक है,
अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, मतलब तुम ये लगा लो कि ये एक ट्यूबुलर पार्ट है ऐसे, और इस ट्यूबुलर पार्ट में इसको सेक्शंस बने हुए हैं, इसके अंदर एक पेपर डाल दिया मैंने, 3 सेक्शन बने हुए हैं इसमें, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो ये ऐसे 3 सेक्शन होते हैं, जो कोक्लिया है ना ये एक ट्यूब है जो कि कॉइल्ड है, और उसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं। तो ये डायग्राम उसका क्रॉस सेक्शन है, दिस डायग्राम, कि इसके अंदर 3 कैनाल्स हैं एक ही कैनाल के अंदर, वेस्टिब्यूलर कैनाल, कोक्लियर कैनाल एंड टिम्पेनिक कैनाल। जो वेस्टिब्यूलर कैनाल है इसको स्केला वेस्टिबुलाई बुलाते हैं, जो कोक्लियर कैनाल है इसको स्केला मीडिया बुलाते हैं, और जो टिम्पेनिक कैनाल है इसे स्केला टेम्पेनाई बुलाते हैं। गॉट इट? यस मैम। मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोक्लिया में पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ होता है, तो यहाँ पे सेंटर में एंडोलिम्फ होता है और दोनों के बीच में टिम्पेनिक और वेस्टिबुलर कैनाल में पेरिलिम्फ होता है। क्लियर है? हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उसके बारे में आऊंगी बिकॉज आई हैव वन मोर डायग्राम टू एक्सप्लेन, बट यस हमारा जो कोक्लियर कैनाल है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर होती है कोक्लियर डक्ट और इसमें होते हैं सेंसरी हेयर। हमारा कोक्लियर कैनाल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाउ कैन आई मूव? यस मैम। थैंक यू। दिस इज अनदर डायग्राम। अब ये बड़ा प्यारा डायग्राम है, इसके अंदर वॉट एवर आई नीडेड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। तो सबसे पहले इफ यू सी दिस डायग्राम, ऊपर का स्केला वेस्टिबुलाई, बीच का स्केला मीडिया, इनके बीच की जो मेम्ब्रेन है उसे रेसनर्स मेम्ब्रेन बुलाते हैं, मेम्ब्रेन नंबर 1। उसके बाद स्केला मीडिया और नीचे वाला क्या बोलते हैं, स्केला टेम्पेनाई, इनके बीच की मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन नंबर 2। गॉट इट? यस मैम। जो हेयर सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ देम, and they are embedded into the tympanic membrane. एक मिनट, tympanic membrane, I'm so sorry. They are embedded, what I have written here. Here cells are embedded in dietary cells में होते हैं, रुको एक मिनट, ये हेयर सेल, अच्छा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, आई एम सो सॉरी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई? ये ऊपर, ये देख रहे हो जो स्केला मीडिया है ना, 2 मेम्ब्रेन तुम्हें बता दी मैंने, अब एक और मेम्ब्रेन बताना भूल गई। स्केला मीडिया के बीच में भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बुलाते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, समझ गए? तो जो ये हेयर सेल्स होते हैं इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। मैम आई जस्ट हैव वन डाउट। सिक्रेटरी नेचर की होती है, हाँ जी। Ma'am, so the hair cells are extensions of the basilar membrane. हाँ, they are extensions of basilar membrane, correct. Okay. Am I audible? Yes, ma'am. You got stuck in between. I don't know. तो ये जो प्रेजेंट होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। जो हेयर सेल्स होते हैं ना ये बेसिलर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, दे आर अटैच्ड टू द बेसिलर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आल्सो, ठीक है। द अल्टीमेट सेंसरी पार्ट ऑफ द हियरिंग इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। जो ये हेयर सेल है ये बेसिलर मेम्ब्रेन और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से अटैच होते हैं, और इन हेयर सेल को सपोर्ट, सिर्फ एक 1 लाइन एंड इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मॉड्यूल में था कि जो हेयर सेल है को सपोर्ट करने के लिए डाइटर सेल होती है। यहाँ पे मैंने डाइटर सेल लिखा ना, ये डाइटर सेल सपोर्ट करती है हेयर सेल, and hair cells are finally sending information to the organ of Corti, which is the ultimate organ. ठीक है? Yes, ma'am. That's it. This is it. So now the next is हमें सुनता कैसे है? बहुत easy है, मतलब मुझे explain करने की जरूरत नहीं है. You will watch this video and you will understand. देखो. Many of us take for granted a very extraordinary organ, our ears. To understand the ear, we need to understand what sound is. The speakers you are listening to right now are vibrating, flexing in and out, causing a wave of pressure through the air. The frequency of these waves
or the speed at which the sound creating surface moves back and forth, affects the pitch of the sound. The level of air pressure in each wave is directly related to how loud the sound is. The outer part of our ear catches these waves. It faces forward and has a specially designed structure of curves, helping us to determine the direction of the sound and also emphasize the frequencies used in human speech. Now that the sound waves are caught, they travel through the ear canal and strike against our eardrum, a thin membrane about 10 millimeters wide. Now that we receive the sound, the middle ear transfers this energy. The smallest bones in your body, the malleus, incus, and stapes, start in motion. The malleus is attached to the eardrum, and as the sound travels along, the force is amplified by leverage until it arrives at the stapes, which acts like a reversed piston, creating waves in the fluid of the inner ear. The most significant increase in pressure is caused by pneumatic amplification. The face of the stapes has a surface area of about 3.2 square millimeters, while the eardrum has a surface area of 55 square millimeters. Using this, along with leverage through the malleus and incus, the final pressure is 22 times greater than when the sound first arrived. Now we come to the most complicated part of the hearing, the cochlea. In reality, it is coiled up, but it is easier to understand straightened out. There are actually 3 chambers inside, but let's take a look at the central part. The stapes is causing pressure waves to travel through the structure. Along the inside wall is about 20 to 30,000 reed-like fibers. As the waves move along, they encounter fibers with the correct resonant frequency and energy is released. These fibers aren't actually what give us the signal that we heard something. There is a special structure next to these fibers containing hair cells. When the fibers resonate, they cause the hair cells to move, which then sends an electrical impulse to the cochlear nerve and onto the brain. Certain pitches of sound will resonate in specific locations, and louder sounds will cause more hair cells to move. Our brain interprets all this raw data, making it possible to enjoy things like music or an engaging conversation. Just to think that all of this is happening in your head right now at full speed. This is just one of the amazing systems found in the human body that go far beyond our humble human understanding. Ma'am, you're muted. I just realized. I'm pretty sure it's clear to you, right? Yes, ma'am. Ma'am, I just had one doubt. Ma'am, in the NCERT they had mentioned about crista ampullaris and all. So what is that? Crista ampulla? Crista ampullaris. एक मिनट रुको, मेरे को तुम्हारा एनसीईआरटी चेक करने दो. क्रिस्टा एम्प्यूलरिस देखते हो तुम्हारी यहाँ से. एक्चुअली पता है क्रिस्टा एम्प्यूलरिस जो होता है ना, आई डोंट नो मतलब ये मेंशन है, ये ना उसमें होता है वेस्टिबुलर कैनाल में. ये कैनाल में ना मतलब रोटेशन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, समथिंग लाइक दैट. ये मतलब रोटेशन जब हम मूव करते हैं ऐसा कुछ होता है ना, ये वेस्टिबुलर कैनाल में होता है. कौन से पेज नंबर पे है ये? 827. P27. अच्छा, which prostate swelling and it's, हाँ ये लिखा ना, the base of the canal is swollen and it's called ampulla, the which contain a projecting ridge. ये वही होता है swollen area टाइप का. ये रोटेशन मतलब इसको मतलब ये रोटेशन में हेल्प करता है, something like which is sensory to the rotation. Got my point?
जैसे मैक्यूला होता है, सॉरी यूट्रिक्यूल होता है, जैसे सेक्युलस होता है, ऐसे ये भी एक टाइप का स्वेलिंग टाइप का होता है. ठीक है. Okay. एनी अदर डाउट? Yes, ma'am. And they had mentioned that macula is a sensory part of scapule and क्योंकि उसमें सेंसरी हेयर है ना. Okay. सेंसरी, जहां पे भी हेयर होगा वो होगा ही सेंसरी. मैक्यूल, सेक्यूल बोल लो, यूट्रिक्यूल बोल लो, सब सेंसरी है. Okay. How does it maintain the balance of the body, like posture and ये बैलेंस प्रेशर के थ्रू मेंटेन रखता है. pressure where, like? नहीं, मैं ईयर की बात कर रही हूँ. ईयर एज अ होल प्रेशर मेंटेन करता है. अगर मैं बात करूं कि ये जो मैक्यूला और ये सब है, तो ये तो मतलब सेंसरी ईयर है, मतलब तभी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है. बिकॉज यहाँ पे ना मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये ऑर्गन बैलेंस मेंटेन करते हैं. दे आर सेंडिंग सिग्नल टू आवर ब्रेन टू मेंटेन द बैलेंस, क्योंकि ये प्रेशर मेंटेन करते हैं. ये If इंटरनल. there is any disturbance in the pressure, it notifies the brain. गॉट इट. तो ये वो बैलेंस का मतलब ये नहीं है मैं बोलूं सेरिबेलम हमारा बैलेंस मेंटेन करता है. तो ये उस प्रेशर को मेंटेन रखते हैं दोनों साइड से इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एवरीथिंग, देन दे मेंटेन इट. And are they like kind of receptors or something that notifies? Yes, they have specific receptor for the balance. एंड ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा है, ये क्रिस्टा और मैक्यूला में होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द बैलेंस. ठीक है. और वो प्रेशर से ही आइडेंटिफाई होता है. Also had few doubts from cell division and cycle, the meiosis part. The language used in NCERT was a bit confusing for me. मैं एक बार आपका एनसीईआरटी ओपन कर लेती हूँ. सेल चैप्टर का नाम क्या है? सेल डिवीजन. Cell cycle and cell division. क्वेश्चन पूछो, मैं लैंग्वेज तो बाद में देख लूंगी. Actually, the explanation part starting from the zygote, like I had a, it was not that clear for me. एक सेकंड रुको. मायोसिस 1 में जाइगोटिन से, एक सेकंड. हाँ, ये हो गया पैकाइटिन जाइगोट. अच्छा, तुम्हें ये नहीं समझ आया? तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझना है या मैं अपने हिसाब से समझा दूं ऑल द चेंजेस? Actually, I just wanted to understand the NCERT line. Like over here, it was mentioned. During leptotene stage, the chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of the chromosome continues through leptotene. Compaction मतलब compact होता चला जाता है. उसके बाद यहाँ पे आता है जाइगोटीन. तो मतलब लेप्टोटीन में तो वो स्ट्रक्चर सिर्फ हार्ड हो रहा है, फिर जाइगोटीन आता है स्टेज में. और जाइगोटीन में क्या है? ड्यूरिंग द स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल. तुम्हें समझ आ रहा है ये कि क्रोमोसोम, अभी क्रोमोसोम का पर्टिकुलर उतना शेप नहीं बना, एलोंगेटेड क्रोमोसोम है जो कि ऐसे पेयर हो जाते हैं, उसको साइनेप्सिस बुलाते हैं. और यही होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हो ना? Similar. हाँ, सिमिलर. I just have one doubt here. Sorry? When they mean by homologous chromosome, is it like two chromosomes which are similar in structure? हाँ, जैसे हमारी बॉडी में 46 है ना, 23 पेयर. तो एक पेयर दूसरे पेयर को मैच करता है. 2n है ना, तो हर चीज का डबल सेट है कि एक जगह हाइट है तो दूसरे वाले पे भी हाइट होगा. एक फादर से आता है, एक मदर से. दे आर होमोलोगस. Okay, ma'am. And one more clarification. Like in a chromosome, there are two chromatids that are there, right? Yeah. Okay, yes, ma'am. That's it. बस मैं इतनी सारी कहानियां पढ़ रही थी यहाँ पे. No, ma'am. No. About that, like अच्छा, afterwards also have a doubt. एक मिनट. यहाँ पे लिखा है 4 क्रोमैटिड. ड्यूरिंग द स्टेज 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट. अच्छा हाँ ठीक है, 2 क्रोमैटिड है तो 4 हो गया. मुझे लगा कि यहाँ कुछ और लिखा है. ठीक है, 2 क्रोमैटिड. तो बाद में जब बाइवेलेंट बनता है तो 4 क्रोमैटिड हो जाता Ma'am, so in the synaptonomal complex, there are two homologous chromosomes. है. यस, उन्हीं के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा ना. डीएनए का एक्सचेंज उसी में होगा ना. Okay, ma'am. Ma'am, so this tetrad is basically the individual chromatids of the two chromosomes are there. यस.
ये जो बाइवेलेंट है यही तो टेट्राड है, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच है। I actually can't see your screen. I'm just seeing the OneNote. 1 सेकेंड, नहीं मैं वो एनसीईआरटी देख रही थी, एनसीईआरटी दिखाने की तो क्या ही जरूरत है, मैंने तुम्हें डायग्राम दिखा देती हूँ। आई वाज लिसनिंग टू यू एक्चुअली। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन में ये रहा ना डायग्राम। बताओ अब, व्हाट इज मोर डाउट इन दिस? Just a minute, ma'am. Okay, ma'am. I think my doubt got clarified. Like I just had a doubt between the bivalent and the diagrams. And all. If you have to rate yourself for the NEET preparation out of 10, how much would you do? I think as of now, 7 or 7.5. And for the board Just like exam? the practice. For the board Board exam? exam, 8.5 or 9 maybe. नाइस नाइस नाइस। तुम्हारे डाउट हो गए? Yes, ma'am. चलो एक काम करते हैं, आई एम मतलब कभी मैं स्क्रीनशॉट स्टॉप कर सकती हूँ ना? ठीक है, सिंस पूरा सेशन डाउट। अच्छा, हाफरा आल्सो जॉइन द क्लास, आई डिडंट रियलाइज। हाय हाफरा, हाउ आर यू? ये चुपचाप सुनती है क्लास को। तुम्हारे कोई डाउट्स है बेटा? आई टेक डाउट्स, अदरवाइज मैं इससे क्वेश्चन पूछने वाली थी हर्षिनी से। आज तो मेरी शक्ल ऐसे 12 बजे पड़ी है, बता चुके। हाँ चलो फिर एक काम करती हूँ, मैं हर्षिनी थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तुम्हें कितना याद है? टोटल कितने कोडोन होते हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं? 61, 64. पूछते हैं हाफरा गया है। हाँ कितने? 61. 61, करेक्ट। स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA. सबसे पहला अमाइनो एसिड जो होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट अमाइनो एसिड लाइक Methionine. Methionine. कोडिंग, मतलब कोड, जेनेटिक कोड। I think U something. I'm not sure. AUG। AUG. AUG. सेंस कोडोन और एंटी सेंस कोडोन में क्या डिफरेंस है डीएनए की? Sense and antisense. Coding strand and एग्जैक्टली, कोडिंग स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड, और जो नॉन कोडिंग है वो मतलब एंटी सेंस है। क्या है ये? And what are they like? Okay, so the template strand has got all the 3 regions: promoter, structural, and terminal thing. And the coding strand, basically all the references are made with अरे नहीं बाबा, देखो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जो डीएनए है उसकी 2 स्ट्रैंड होती है, सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस। जो एंटी सेंस स्ट्रैंड होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनता है नया आरएनए। समझ गए? I just have one doubt. The antisense strand is nothing but the coding strand, right? Or is it the opposite? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, दैट्स नॉट ऑपोजिट। मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से। जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है नया आरएनए। और सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि ये कोड कर रहा है तो ये कोडिंग है, बट एक्चुअल में हम कोडिंग वर्ड वी शुड नॉट यूज। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ना, जो चुपचाप बैठा है, जो कोई कुछ नहीं कर रहा, वो है कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। अब उसे कोडिंग सेंस या सेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज सेम एज दैट ऑफ द आरएनए। क्योंकि उसकी और आरएनए की सीक्वेंस सेम है, तो वो कोड ही तो है। ऊपर वाला जो आरएनए है वही तो एक्चुअल कोड है, बस थायमिन की जगह यूरासिल आ गया, तो इसीलिए उसको सेंस या वो बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि उसका सीक्वेंस इज सिमिलर। जबकि होता ही एंटी सेंस से कॉम्प्लीमेंट्री है। गॉट इट? Yes, ma'am. अच्छा, शाइन डेलगैनो सीक्वेंस का क्या पर्पस है? I don't know why I'm asking in molecular basis, but yeah, I feel people have I'm doubts. sorry, could you please repeat the question? SD sequence, शाइन डेलगैनो सीक्वेंस का क्या पर्पस है? It helps in identifying the location of the promoter region. नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइबोसोम।
तुम्हें पता है ना, स्मॉल यूनिट सबसे पहले जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट अलग होते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो आता है प्ले में। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और स्मॉल राइबोसोम, ये तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो शाइन डेलगेनो से मैच करते हैं। ठीक है, उस पे शाइन डेलगेनो होता है, इस पे एंटी शाइन डेलगेनो होता है, एंटी एसडी। तो ये मैच करते हैं। ठीक है, ये तो होता है प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में होता था 7mg ग्रुप, कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल 7mg ग्रुप ही होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आई एंड द सेशन। प्रिब्नो बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स क्या होता है? No box is just, it's a sequence that is present just before the promoter sequence. It helps it to identify that. Yeah, upstream. Upstream बोलते हैं उसको, हाँ, माइनस। टाटा बॉक्स क्या होता है? Tata box is similar thing, but in eukaryotes. टाटा बॉक्स ही हॉगनेस बॉक्स है, Oh, okay. अदर नेम। एक और पूछ लो। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया, छोड़ो, ये भी पूछती हूँ। जेनेटिक्स, हाँ, इमेजिन तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन लिखो, तो व्हाट विल बी योर वर्ड्स? दिस इज फाइनल लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। Organ linkage and recombination. He explained it through the Drosophila experiment. और तुम The इसमें genes that are हाँ, सॉरी, the तुम बोलो। genes that are closely located, they are linked. हाँ, And in such cases, the parental combination is higher than the recombinant. So crossing over and linkage is like inversely proportional. and you can explain about the work in Drosophila also. ठीक है, ड्रोसोफिला का पूरा वो था ना विंग्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है, that you can explain. चलो ठीक है डियर, good luck to you. Any more doubt? Ma'am, actually, I had few doubts from the MCQs. It's a bit long, so I think I'll schedule for another session. नहीं तो परसों है ना सेशन? ओके, कल फ्राइडे है ना, तो कल भी तो होगा हमारा। नहीं, हमारा सेशन थर्सडे और सैटरडे को हो रहा है, कल है क्या? एक मिनट चेक करने दो। कल फ्राइडे है तो कल है हमारा सेशन 6:30 to 7:30, आ जाना। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, Thank you, ma'am. थैंक यू, बाय बाय।